और कई सौ लोकल, स्टेट और फेडरल अथॉरिटीज कंटिन्यू कर रहे हैं इस समय भी सर्च करना सिटी ऑफ लिविंगस्टन और सराउंडिंग एरियाज में मेन के। जी हां, जब ढूंढा जा रहा है मैस शूटर को कनेक्शन में मेन की मैस शूटिंग के लिए जो हुई है बार और बोलिंग एले में, और जिसमें मारे गए हैं 18 लोग और घायल हुए हैं कई दूसरे। लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स का कहना है कि उन्होंने बढ़ा दिया है पैरामीटर यानी कि दायरा अपनी सर्च का सस्पेक्ट शूटर रॉबर्ट आर कार्ड के लिए, जो कि है इस समय पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। मेन पब्लिक सेफ्टी कमिश्नर माइक शासनिक ने बताया है न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कि डाइवर्स सर्च भी कर रहे हैं मैस शूटर को लोकल रिवर में भी, जबकि साथ में जारी है एरियल सर्च भी पकड़ने के लिए 40-year-old मैस शूटर को। जबकि सस्पेक्ट के घर के अंदर से मिला है एक सुसाइड नोट भी कुछ देर पहले, जो कि उसने लिखा अपने बेटे के लिए, जबकि नोट में मोटिव नहीं लिखा है इस मैस शूटिंग का। जबकि पूरे एरिया में इस समय भी है शेल्टर इन प्लेस, जिसको बढ़ा दिया गया है आज के दिन। And what will happen in this general location today is that we will be putting divers in the water along that Androscoggin River, which you see here, and that's going to look like a couple of different things. So the very first thing that you're going to see out there is you're going to see some air resources that will fly over this particular area, and they're looking to see what can we clear from the air. Do I have to put divers in that particular area, or can I tell from the top, based on the current and how muddy the water is and all those other things, can I see to the very bottom here? So that's going to start this entire process. Then there's going to be some screening and some divers that are actually in the water that may start on this side by the boat launch and will continue on this side. I would envision at some point that we'll be moving over to these particular locations here for ground searches as well. I think that every minute that this goes on, we're more and more concerned, because what's the next thing that's going to happen? And we understand that, and that's why we're working 24/7. जबकि यहाँ पर आपको बताते चलें कि 8 लोग जो कि हैं घायल मेन की रीसेंट मैस शूटिंग में रिसीव कर रहे हैं इस समय भी मेडिकल ट्रीटमेंट सेंट्रल मेन मेडिकल सेंटर में, जो कि जब मैस शूटिंग हुई है लिविंगस्टन मेन में, जिसमें मारे गए हैं 18 लोग। जबकि सेंट्रल मेन मेडिकल के प्रेसिडेंट ने बताया कि 5 पेशेंट्स की कंडीशन है स्टेबल और 3 पेशेंट्स हैं अब भी क्रिटिकल कंडीशन में। और इस खबर का ऐलान किया गया एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान, जिसको ज्वाइन किया रिपब्लिकन सेनेटर सूजन कॉलिंस ने भी, जिनका कहना था कि करीब 80 FBI एजेंट्स इस समय पार्टिसिपेट कर रहे हैं सर्च में सस्पेक्ट की, जिसको आइडेंटिफाई किया गया है 40-year-old रॉबर्ट आर कार्ड के नाम से, जो कि है सार्जेंट नियर बाय US आर्मी रिजर्व बेस में, जिसके लिए लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स का कहना है कि उसको टेम्परेरीली कमिट किया गया था मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में भी इस साल गर्मियों में। जबकि कम्युनिटी अब भी है शॉक्ड इस रीसेंट मैस शूटिंग से। I ask Maine people to join me in offering our comfort to the families and friends who have lost someone, and in offering our prayers for swift recovery for those who are healing in Maine's hospitals today. Let's work together to ban assault weapons and high-capacity magazines. Let's work together to enact universal background checks. It makes it a lot harder to, wrap your head around that somebody could just go out. I mean, having mental issues, whatever. I deal with mental issues every day. It's not one of the things I would think to do. It's heartbreaking. It really is. I cannot explain to you because we are really very shocked about that. We never thought it's going to be happen like that in Maine. All but one of the patients that were taken from the scenes last night were brought to Central Maine Medical Center. One was transported directly to St. Mary's Medical Center here in Lewiston. This heinous attack, which has robbed the lives, is the worst mass shooting that the state of Maine has ever experienced and could ever imagine.